Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Bhooumi Mathur, teenager 15 years old, and this is my new video. So in today's video, I am gonna be painting something like a different thing. मतलब different नहीं, पर मैंने, if you guys remember the painting I made and surprised everyone in Jaipur, जो मैंने birds की painting बनाई थी with different shades of and layers of paints. आज मैं वैसा ही कुछ पेंट करने जा रही हूँ बिकॉज मैंने उस पर पहली बार बनाई थी एंड आई मेड इट ऑन कार्डबोर्ड वट एवर यू वांट से. आज मैं उसे कैनवस पे बनाने की कोशिश करूँगी एंड होपफुली इट जस्ट गो वेल, क्योंकि कैनवस इज़ मच ईजियर देन कार्डबोर्ड पे मुझे ब्लेंड करना एंड लाइक कलर मिक्स करना. द शेड ऑफ कलर वॉज इन परफेक्ट. मुझे 2-3 लेयर्स लगी थी कार्डबोर्ड में पेंट करने के लिए, पर यहाँ पे एक ही लेयर लगेगी एंड विच इज़ अ काइंड ऑफ लाइक अ कर्वेचर ब्लेंडिंग. सो आई जस्ट थिंक बिकॉज आई एम गोना डू दिस सेकेंड टाइम एंड लास्ट टाइम आई मिस्ड अप अ लॉट ऑफ टाइम, लाइक अ लॉट ऑफ टाइम. इट टुक मी लाइक 3 days, 2 to 3 days टू कम्प्लीट इट. मैंने एक बार छोड़ भी दी थी एज यू गाइस हैव सीन इन दैट वीडियो एंड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई थी बेसिकली उसमें. एंड व्हाट आई वांट टू से इज दिस ब्लेंडिंग इज़ लाइक अ कर्वेचर थिंग. सो आई जस्ट होप दिस पेंटिंग जस्ट गोज वेल एंड आई डू नॉट मेस अप इन दिस. सो या आई विल जस्ट चेंज इन टू माई पेंटिंग आउटफिट एंड लेट्स गेट स्टार्टेड. Okay, so I'm all changed in my outfit. My paint se lathpat t-shirt and I'm just gonna start painting. Here's all my setup and my mom is doing something which I never thought she would do. जो उन्होंने किया है, उन्होंने निकाला है बटर, वो भी हाथ से निकाला ना आपने. किसी मेरा अच्छी नहीं लगती. और मैंने पूरा बटर हाथ से निकाला. बहुत देर से यहाँ पे खड़े हैं मम्मी. बटर अच्छा होता है पर मेरे को स्मेल अच्छी नहीं लगती. एनीवेज वी शुड गेट स्टार्टेड इनटू माय पेंटिंग वीडियो. पेंटिंग ज़्यादा नहीं कहाँ चली गई मैं. एनीवेज लेट्स गेट स्टार्टेड. सो व्हाट बेसिक आइडिया इज दैट आई एम गोना स्टार्ट पेंटिंग. वेट अ सेकेंड, आई नीड टू सेट द कैमरा. So what my basic idea is, I'm gonna start painting from this corner with light shades and then I'm gonna change the shade into pink and then blue or green, like white, yellow, pink and then blue or green. I'm gonna decide it according to my thing and then I'm gonna be swirling up like a climber. बेल जैसे ऊपर जाती है, like a seaweed. And I think I'm gonna make board on it or just leave it like that, or maybe I'm gonna make something else. But my basic idea is just why my English is anyways मैं अटक जाती हूँ बीच में. I'm gonna experiment myself that I could do this or not again. So you just have to be experimenting yourself so that you learn. That's the basic rule. Anyways, let's get started. So I started with the white and yellow paint at the corner and just started blending it in. And now I put the orange paint, which wasn't really blending into my yellow, but I made it. And then I added a bit pink and started blending it again. Here goes another color. It may look pink right here, but this is red and I blended into my pink. And then I added a shade of purple, actually 2 shades of purple, and blended it into red and also added a bit amount of white. Now here I added ultramarine blue, which wasn't really blending into my purple, but I made it. And my phone was about to fall. Anyways, now I added light blue, which was blending, but it wasn't saying that is light blue. It was like, okay, fine, I made it.
एंड देयर आई मेड अ मिस्टेक. मैंने रेड में बहुत ही ज़्यादा ब्लेंड कर दिया पर्पल को, एंड दैट वाज माय मिस्टेक. Anyways, now I added a bit yellow because it was looking a bit dark, and now I added white. I think this was coming out really great. So let's just keep blending it. Now I started ending branches at the corner of the canvas, and I made a few branches within it, sub branches with it, and they all were crossing each other. Now it's time for leaves, and leaf was exactly how I wanted, so it was really great. I made leaf small, big, and also medium. At the corner there were big leaves, at the bottom there were small leaves. I made an extra branch for a bird which was sitting facing sidewards, and a bird again on the top branch which was sitting slanted on a branch. And now a bit finishing touches of leaves, and there we go. So my painting is finally completed and this is looking beautiful. मैंने थोड़ी गड़बड़ी की थी यहाँ रेड वाले पोर्शन में, पर मैंने सही कर दिया था उसे. पर जैसा लास्ट टाइम हुआ था उससे तो बहुत बेटर है. आई मीन द वाइट शेड ओवर हियर इज़ परफेक्ट, एंड जो एंड में मुझे ब्लू का शेड चाहिए था वो बिल्कुल परफेक्ट है. बस जो गलती हुई थी वो यार रेड वाले पोर्शन में हुई थी, बाकी एवरीथिंग इज़ ब्यूटिफुल. और ये जो वीड्स जैसे क्लाइंबर्स जैसे मैंने बनाए थे, इसमें 2 birds are looking beautiful. I am happy with my work, so yeah, hope you enjoy the video and thank you for watching. Take care and bye bye. बच्चों को लेट के टीवी नहीं देखना चाहिए. बच्चों को लेट के टीवी नहीं देखना चाहिए. बच्चों को बैठ के टीवी देखना चाहिए. बच्चों को लेट के अभी नहीं, अभी छोड़ दो, अभी तो खाना खाएंगे. बच्चों को लेट के टीवी नहीं देखना चाहिए. बच्चों को बैठ के टीवी देखना चाहिए, नहीं तो आंखें खराब हो जाती है. पर जब मैं यहाँ आऊँगा फिर से तब तो लेट के टीवी देखूंगा, क्योंकि ये तो बस एक ज्ञान था. बाय बाय. If you find the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love.